नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jayo Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jayo Jayo Prabhupada. और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गणपति के वैष्णव की जय। Hare Krishna. Thank you, Ronnie Prabhu, Shwani Mataji, and Mataji and Prabhuji. Thank you so much. जब भी मैं सबको इकट्ठे कीर्तन करते हुए सुनता हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि प्रभुपाद बड़े प्रसन्न होंगे. The whole family is doing kirtan together. So, is my voice little better or worse? Ronnie Prabhu, I'm trying those headphones. Or No, Prabhuji, it's breaking. क्या कह रहे हैं? I don't hear. It's fine. Is it better or I can? क्योंकि इसके साथ is it little better or is it okay without it also? It's fine both ways, but if Both. it is better for you, then we can keep it on. I will try today how it goes. Yeah. Then we'll see. Prabhuji. Right. ठीक है. Thank you, Prabhu. So Hare Krishna, devotees. So thank you so much for joining in our weekend session. Not much was happened in the weekend, or some devotees said कि because of the lockdown and other things, जो devotees हैं उनको लग रहा है थोड़ा सा the mood है is becoming little sad कि घर में फंसे हैं, कहीं बाहर जा नहीं पा रहे हैं, और so we could have something lighter, कुछ हल्का सा हम कुछ ऐसा पढ़ें which is little lighter to read. So then we thought, okay, we will try to read Mahabharata together. प्रभुपाद बोलते हैं, आई थिंक भागवतम के पहले स्कंद में लिखते हैं प्रभुपाद की ये जो कलयुग है इसमें it is more important to read Mahabharata than the Vedas. So we can understand that this जो महाभारत है is a शास्त्र. It has been given to for us only, the fallen souls of Kali Yuga. So that's because जिनका who don't have adhikar to read the Shruti or the Puranas, which is Smriti, then for Itihas, everyone has a right to read like this. So that is why Vyasdev, he wrote Mahabharata, so that everybody can get. और इसमें जो है अच्छी बात ये है
though it comes in a little कर्म कांड, devotee sometimes ask question, ये क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, because हम लोग ट्राई करते हैं देखने के नजरिए से भक्तों के, but वो जो महाभारत is a drama happening in a varnashram setting, what a kshatriya does, what a vaishya does, what a brahman does, like that. It is not done for it is not Bhagavatam कि जहाँ डिवोटी बता रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, राजकाज ले जाओ, ऐसे नहीं चाहिए, because it is done for a common man. But अगर हम भक्ति के दृश्य से देखते हैं, then we can see the subtle intricacies कि what is happening, then we can appreciate. So आप लोगों से we'll see that just be a little patient, and when we see, just see it from the perspective that it is a drama being done to facilitate people getting attracted to Pandavas and Krishna. इसी ड्रामा के अंदर जो है भगवद गीता भगवान बोलते हैं. So we'll begin our class now. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. गुरु श्री प्रभुपाद की जय. ओके, सो ये जो महाभारत है, ये आप सब जितने भी भारतवासी हैं उन सबको मालूम है कि महाभारत सब परिचित है. सो आई विल नॉट स्पीक अबाउट महाभारत पर से, और हम लोग जो है इसके अंदर सीधा जो है स्टेप रख रहे हैं महाभारत के अंदर. सो आई विल डू द स्क्रीन शेयरिंग. मुझे तो आज ही पता चला कि ये वेदाबेस पे भी अवेलेबल है ये, तो आई विल डू द स्क्रीन शेयरिंग एंड आई विल शो फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट. Rani Prabhu, can you allow me to do screen sharing? Thank you. Sorry, Prabhu. No problem. Okay, one second. Let me open my book also. One second. Hare Krishna, one second please. I'll just read it out. Hare Krishna. So, जो इसका जो बैकग्राउंड है जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, जो महारानी है सत्यवती, इसका बिकॉज वी विल एंटर इट लिटिल लेटर. हम जो बुक है शुरू से ही पढ़ रहे हैं, बट जो शुरू के कुछ पेजेस हैं हम उनको स्किप कर रहे हैं. बट आई एम जस्ट गिविंग यू द बैकग्राउंड कि जो महारानी सत्यवती हैं, कैसे जो शांतनु है, महाराज शांतनु, वो जंगल में शिकार करने जाते हैं और he gets attracted by the smell. और जब वो देखते हैं तो he finds a young maiden from whose body the smell is coming, like कमल के फूल की तरह की उसमें से खुशबू आ रही है, and she is very beautiful. और वो उसको जाते हैं और पता चलता है कि वहाँ के जो लोकल जो विलेज है उसके जो चीफ हैं वो उनकी बेटी है. और जब वो जाते हैं तो उससे मिलते हैं और उनको उससे जो है उनकी जो पुत्री है उनका हाथ मांगते हैं. और जो वहाँ का जो फिशरमैन और उनका जो क्या कह सकते हैं जो चीफ है, इज़ वेरी हैप्पी. इतने बड़े तेजस्वी राजा शांतनु महाराज उनकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं. और वो देखते हैं कि कैसे वो एक शर्त रखते हैं कि इस जोशी ने मुझे बताया था कि जो मेरी पुत्री है उसके जो बेटे हैं दे विल बी द किंग्स. वो कहते हैं कि मेरी शर्त है कि जो मेरी बेटी के जो पुत्र हैं वही राजा बनेंगे आगे.
तो जो महाराज शांतनु है वो सुन के बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि he already has a very illustrious son, और सोचते हैं कि कैसे इतने जो गंगा के पुत्र हैं और देवव्रत का नाम है, और इज वेरी वेरी इलस्ट्रियस प्रिंस। वो सोचते हैं कि कैसे उनके साथ मैं ऐसा अपने पुत्र के साथ कैसे कर सकता हूँ, जस्ट टू मैरी हर, दैट आई विल। Okay, they are saying to speak louder. Okay, Prabhuji, because the voice echoes in my ear, so it sounds very loud. So I'll disconnect it, Prabhuji, because it is. प्रभु जी लो भी है और समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है वॉइस। Sameer, how do I disconnect? Can you switch it off? आप ठीक है। Can you hear me now? Prabhu? Yes, Can you hear me now better? yes. This is better, clear. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. So off. Can you say something? I can hear. Yes, Prabhuji. Yeah, I'll just take this part away. So off. I think. Hare Krishna, Prabhu. I think it did not get disconnected. The device did not get disconnected. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Yes, Prabhuji. This Oh, is wow. आ गई Prabhuji, आ गई. It was uncomfortable. I'm sorry for this little failed experiment. Okay. So हम पढ़ते हैं कैसे कि जो शांतनु है, महाराजा जो शांतनु है, वो बहुत दुखी होते हैं, बिकॉज जो नेक्स्ट जो राजा बनने का अधिकार है वो बड़े पुत्र का ही होता है, और पुत्र भी ऐसा जो स्वयं गंगा का पुत्र हो। और तो वापिस आते हैं, और बट वो उस युवती को भूल नहीं पाते हैं, और कैसे उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो देवव्रत हैं वो पता से पूछते हैं कि आप क्यों उदास हैं, but he doesn't say because he knows it is inappropriate. और उसके बाद जो वो देवव्रत हैं वो अपने पिता के जो सारथी हैं उनसे पूछते हैं कि कल पिताजी कहाँ गए थे, मुझे लेके चलिए, और वो लेके जाते हैं, और वो उस जो वहाँ का जो मुखिया है उस गांव का, उससे मिलते हैं। पता चलता है फिशरमैन के मुखिया से कि क्यों आए थे पिताजी, और उन्होंने ऐसी शर्त रखी। तो जो भीष्म है तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जो अपने पिता के सुख के लिए मैं इस चीज को भी मान जाऊंगा कि मैं जो है राजा नहीं बनूंगा, और जो आपकी पुत्री से आप अपनी पुत्री का मेरे पिताजी से विवाह कर दीजिए, और जब भी इनका पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो वो जो मुखिया है, जो उनका जो चीफ है, ही इज लिटिल स्ट्रीट स्मार्ट, और वो कहते हैं कि देखिए आपके ऊपर तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो है आपने जो वचन दिया है वो क्षत्रिय वचन आप निभाएंगे, बट कल को आपके पुत्र होंगे और वो इसका हिस्सा मांगेंगे, वो बोलेंगे कि जो असली उत्तराधिकारी थे वो हमारे पिता थे, तो अगला जो राजा हमें बनना चाहिए। तो इससे जो मेरे जो क्या बोलते हैं, मेरी पुत्री के जो पुत्र हैं उनके ऊपर संकट आ जाएगा। और ये सुन के जो देवव्रत हैं फिर उसमें प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं क्षत्रिय होते हुए भी मैं विवाह नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और इसी से उनका जो नाम है वो भीष्म पड़ा, क्योंकि क्षत्रियों दे स्टे विद इन द पैलेस, वहीं रहते हैं, एंड they are exposed to women, and to remain a brahmachari in that for a kshatriya king is very difficult, rather impossible. हमने कितनी कथाएं पढ़ी हैं ऐसे। So then उनका जो नाम है भीष्म पड़ता है। और उसके बाद as the luck would have it, then
जो उनके जो पुत्र हैं आगे होते हैं सत्यवती के, दोनों की ही मृत्यु हो जाती है, पहले एक की और फिर दूसरे की, दोनों की मृत्यु हो जाती है। उनकी उनकी दो रानियां होती हैं, अंबिका और अंबालिका, और दोनों से ही पुत्र नहीं होता। और जो महारानी है सत्यवती, उनकी जो मदर है, मदर इन लॉ, तो दोनों जो वधुओं को देखते हैं कि हमारा जो कुल है इतना इलस्ट्रियस गुरु जो कुल है उसका जो है आगे कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है, तो ये सोचते हुए वो भीष्म से रिक्वेस्ट करती हैं और उनको बोलती हैं कि आप अपना वचन तोड़ दीजिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अगर पति का देहांत हो जाए तो जो पति के भाई हैं उनसे पुत्र उत्पत्ति है। और किसी के घर का कंपैरिजन मत करो। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। सो उससे जो है अवेलेबल है, मतलब आप जो है अगर पति का देहांत हो जाता है तो पति के भाई से भी पुत्र उत्पन्न करने का एक विधान है। ये विधान कलयुग में नहीं है, ये कुछ ऐसे हैं विधान जो दूसरे युगों में थे पर कलयुग में नहीं है। और सो उस युग में विधान था और उसी को विधान को लाइक एक्सेप्शन, इट इज देयर एज एक्सेप्शन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो जो सत्यवती हैं वो भीष्म को रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारा कुल आगे बढ़ाने के लिए, नहीं तो कुल का यहीं समाप्त हो जाएगा, आप अपना वचन तोड़ दीजिए और ये जो रानियां हैं इनसे पुत्र उत्पन्न करिए। तो जो भीष्म है वो मना कर देते हैं, वो माता को बोलते हैं कि मैंने तो आपके पिता को भी वचन दिया था और मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। और तो उस वक्त जो सत्यवती हैं उनको अपने बड़ी ही ग्लानि होती है कि मैंने अपने मेरे जो पिता हैं उन्होंने कैसा वचन मांगा और जो उन्होंने मेरे हित के लिए मांगा आज वही नुकसान के लिए बनता जा रहा है। What he thought is very beneficial to my daughter and मेरे पोतों के लिए अब वही जो है अब मुश्किल बन गया। और फिर उनको वो एक बड़े अपना एक सीक्रेट बताते हैं कि कैसे शादी से पहले also she had a son। तो बताती हैं कैसे एक बार वो she was crossing a river, she was there and पराशर मुनि मिलते हैं उनसे, जो बहुत ही एक उच्च कोटि के ऋषि मुनि है। और he meets her and he says कि इस वक्त जो नक्षत्र है वो इतने उत्तम है कि अगर जो भी इस नक्षत्र के टाइम पे इसकी तो एक बहुत ही महान सोल विल कम। और वो मना करती हैं, वो बोलती हैं कि नहीं मेरी तो अभी मैं कुंवारी हूँ और I can't have an association with a man and how can I have a child। तो जो पराशर मुनि है वो बोलते हैं कि मैं आपको ये बेनेडिक्शन देता हूँ कि आप कुंवारी ही रहेंगी, बट और ऑल्सो आप he gives her some benedictions, but main thing is this कि you will remain your maidenhood, but I request कि let a child come। ये जो नक्षत्र है उसमें एक जो है एक बहुत ही उत्तम सोल आएगी। So she agrees and they mate and Vyasdev is born and immediately he grows up very fast। और जो व्यासदेव हैं वो उनसे मिलते हैं और because he's a celestial being, he's not a ordinary jiva and he grows up very fast and he immediately goes and he says before going कि I'm going but आप कभी भी मुझे याद करेंगे तो I will come। जब भी आप कभी मुश्किल में हो आप मुझे याद करिए, I will come but I have to go and do tapasya and austerity at Badrikashram। So or Himalayas, he goes। So she remembers that part और वो भीष्म को भी बताती हैं कि कैसे ये हिस्ट्री रही। और भीष्म बोलते हैं कि देखिए जो विधि है और भगवान ने ऐसा ही विधान कुछ बनाया तो आप उनको अब याद करिए और उनको रिक्वेस्ट करिए क्योंकि वो भी आपके पुत्र हैं। तो वो इन पुत्रियों से जो आपकी जो पुत्रवधु हैं, जो डॉटर इन लॉ है, then he can have child। So वो उनको बुलाती हैं और वो आते हैं और उसके बाद ये कथा हम सबको मालूम है कि कैसे जो he goes and she requests सत्यवती, व्यासदेव agrees और उसके बाद
जो है वो पहले वो अंबिका के पास जाते हैं और जो वो बाहर आते हैं तो उसके बाद वो बताते हैं कैसे सत्यवती पूछती हैं कि एवरीथिंग वेंट वेल सो नाउ विल हैव ए पुत्र। तो वो बताते हैं कि हाँ पुत्र तो बहुत ही आपका जो है वो बलवान होगा, उसमें 10,000 हाथियों का बल होगा एंड ही विल बी वेरी illustrious बट ही विल बी ब्लाइंड। तो जो सत्यवती है वो हैरान हो जाती है कि क्या हो गया। सो देन he tells कि because seeing my condition, because व्यासदेव का जो हुलिया हम पढ़ते हैं तो we will find that no lady would like to come even near him। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ थोड़ा सा क्या लिखा है कि उनका बिकॉज उनको यही नहीं मालूम होता, महाभारत में बताते हैं कि who is coming because they assume the brother is going to be Bhishma। See, the Ambika thinks the brother is going to be Bhishma, and she accepts as a service to the Rajkul. She accepts, okay, and but when he enters, then it is written here that her blood turns cold by seeing that personality who enters in the room, and I'll just read. This was not Bhishma. There in her bedchamber stood a wizened, ugly, filthy ascetic. His matted locks hung about his gaunt face, and he stared at her with fierce eyes. His teeth were only slightly less black than his complexion. Around his waist was a soiled loincloth, and his only garment, his hairy body was encrusted with dirt. So you can understand that they are princess Rajkumaris and they see such a person. तो वो जो अंबिका है वो अपनी आंखें डर के मारे बंद कर लेती है और बाद में व्यासदेव बताते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तो जो पुत्र होगा वो अंधा पैदा होगा। But he will be very strong. He will have many good qualities because he's come from me। तो जो सत्यवती हैं वो अपने आप को ही ब्लेम करती हैं कि मैंने ठीक से इनको तैयार नहीं किया और बहुत जल्दी में मैंने ऐसे बोल दिया, मुझे पहले बताना चाहिए था। Then she requests him to come again, and then he comes for the second daughter-in-law also। Or then when he comes out, then again Satyavati asks, everything went well this time? Then he says yes, but this son will be very auspicious, he'll be very strong, he will be very dharmic, but he will be very pale because the queen, your daughter-in-law, she just seeing me, she turned pale। She didn't close her eyes because Satyavati ने बोला था कि आप ध्यान रखना, but डर के मारे उनका रूप देख के she just turned pale। तो he says that he will be very pale। और इसीलिए जो उनका नाम है वो पहले ही बता देते हैं व्यासदेव, पांडु होगा। पांडु means one who's pale, whose color is pale। So जो सत्यवती हैं वो सुनती हैं और उनको पहली बार में तो उनको लगता है अंधा तो बेटा कैसे करेगा, but अब now she feels yes somebody is there, but she still feels कि अभी भी कमी रह गई because he will be pale। तो एक बार और रिक्वेस्ट करती हैं उनको व्यासदेव को कि आप आइए। और इस बार जब व्यासदेव आते हैं तो जो उनकी जो पुत्रवधू है वो डर के मारे, उनको मालूम है कि क्या व्यक्ति है और जो उनका जो रूप है उससे डर रही होती है। तो वो एक मेड सर्वेंट को, नौकरानी को आगे कर देती है कि आप रात को आप चले जाइएगा। और व्यासदेव he knows what is happening because he's Trikaldarshi, he's a Shakti Avesh avatar of the Lord himself, so he knows what is happening। और वो जो नौकरानी है वो उनका बड़ी सत्कार करती है, उनको पैर धोती है, उनको अच्छी तरह से आदर करती है। एंड when Vyasadeva comes out, then Satyavati asks everything went well। He says yes, everything went well। जो पुत्र होगा he will be very मेधावी, he will be धर्म के उनके पूरा ज्ञान होगा। बहुत सारी बेनिडिक्शन देते हैं, पर बताते हैं कि ये पुत्र जो है ये आपकी पुत्रवधुओं से नहीं है, बल्कि जो आपकी पुत्रवधु है उन्होंने एक दूसरा जो नौकरानी है उसको आगे कर दिया। बट क्योंकि ये पुत्र में से हुआ है, so he will be धर्म himself will come। और then she is again shocked कि अब क्या हुआ। और then Vyasadeva tells, reading her mind, कि ये जो विधान है it is only to be used in exceptional circumstances, so you have already requested me 3 times, so no more। And then he goes back। So that's how
Then first child is Dhritarashtra, second is Pandu, and third is Vidur. तो ये ऐसे इनका जन्म होता है. अब उसके आगे अब हम पढ़ते हैं. मैं आपको स्क्रीन शेयर करके, स्क्रीन शेयर इज ऑलरेडी देयर आई थिंक. ओके, सो यहाँ से अब हम ये स्क्रीन शेयर करके अब मैं पढ़ रहे हैं. वी कैन ऑल्सो रीड, ऑल ऑफ अस ऑल्सो कैन रीड, दोज हु कैन, हु वांट टू रीड can, I will just read few paragraphs just to get into the rhythm. और उसके बाद आप में से जो लोग पढ़ना चाहते हैं, please raise your hands and then we can read. और जहाँ जरूरत पड़ेगी, then we will do some explanation. But my request to all of you is कि आपसे यही प्रार्थना है कि इसको ये मत बार बार पूछेगा कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं या इन्होंने ऐसे क्यों किया. तो क्योंकि ये थोड़ा सा हम जब अंदर जाएंगे, then we will understand कि ये जो सॉरी ये जो है, it is like a drama. ये ड्रामा हो रहा है, भक्त नहीं है, ये भक्तों के लिए नहीं है. मतलब भक्त ये नहीं कह सकते भक्तों के लिए नहीं है, बट वो भक्तों की भूमिका नहीं अदा कर रहे हैं, बल्कि वो जो भूमिका अदा कर रहे हैं वो एक क्षत्रिय की कर रहे हैं. और एक क्षत्रिय को कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके अंदर ये सारा प्रसंग है. अगर आपको भक्त कैसे होना चाहिए तो फिर आप भागवतम पढ़िए. बट दिस इज मोर लाइक ए, आई विल से स्पिरिचुअल थ्रिलर. ये उस दिन शिवानी माता जी ने क्वेश्चन पूछा, तो मैं महाभारत में जाके मैंने खोली, मैं कहा चलो मैं लेट मी रीड. And it was so interesting. Then I thought, okay, I'll read. और मैंने आप सब लोगों से शेयर भी किया था कैसे भक्ति विद्यापुर महाराज इसके सेशन दे रहे हैं. तो फिर मुझे बाद में ये भी लगा कि okay, I'm doing Shravanam, so I can do Kirtanam also like this. So we'll read now. So यहाँ से we are reading from here. The maidservant gave birth to a child named Vidur. ये तीसरे बच्चे की बात हो रही है. Who later became the chief minister and the advisor of Kuru house. He was raised alongside the two brothers, and the three boys grew up like resplendent gods. Everyone was satisfied that the kingdom was secure. Happiness and prosperity were everywhere as the gods showered their blessings on the kingdom. Bhishma ruled as a regent while the boys grew up. So everything became auspicious. उनको उत्तराधिकारी मिल गए आगे राज्य के, और जो देवी देवता हैं बड़े प्रसन्न, और सब तरह से उनके जो राज्य है उसमें खुशहाली ही खुशहाली है. Although Dhritarashtra was the eldest, his blindness disqualified him from becoming the king. So what is happening? So he is disqualified not because of some prejudice, because एक राजा का मतलब है कि वो आगे जाके lead करे. He has to lead. So leader means a king cannot be blind, because how will he fight? How will he know? He will always be too dependent on others. So he cannot be the leader because he's so dependent upon others to understand what is happening around him. So he is disqualified from that perspective. Not that कि उनके साथ बुरा हुआ या उनके साथ ऐसा, because that he's not. He's very you should say. He has all the good qualities, but not fit for the service of being a king. So, like Bhakti Vidyapur Maharaj was saying, you will not allow your, just because a blind man wants to become a driver, you will not make him a driver of your car, because he's not fit for that service, like that. So, nor could Vidur assume the throne as he was born of a servant girl. तो वो भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक maid servant के पुत्र थे. But Pandu was a worthy monarch in every way, and when he came of age, which means जब वो बड़े हो गए, he was installed on the Kuru throne. Pandu excelled all men in archery, and he soon became skilled in the Vedic science of leadership and diplomacy. So he was trained, he was groomed, and he became a rightful Uttaradhikari of Kuru dynasty. All three brothers were given best education and were raised with affection by Bhishma, as predicted. So there is no distinction between their education and everything, whether be it Dhritarashtra or Pandu or Vidur. The education, same education and training is being given to all three of them. But for the king, Pandu is the chosen one. As predicted by Vyasadeva, Dhritarashtra displayed immense bodily strength, and Vidur was naturally wise even from childhood. His devotion to religion and morality could not be matched by anyone.
when he reached maturity, even the learned Bhishma would seek his counsel. So this is the duty of a Kshatriya. The Kshatriya are the administrators, but they always have to seek counsel from a Brahman. This has to be done. A Kshatriya never does act independently. इसलिए बोलते हैं कि जो लोग सर्विस में हैं, they must seek counsel. So even Bhishma would ask counsel from Vidur. It was thus one day that Bhishma approached Vidur and said, "O wise one, we should take steps to ensure that our noble line does not again face extinction. The two princes are ready for marriage. I have heard that there are three princesses worthy of being allied to our house. Tell me your thoughts on this, O Vidur." So they have come of age and they are ready to get married. So of marriageable age, so they want the next generation to come. So and already they had an issue that both the princes of Ambalika and Ambika, they died their husbands. So they don't want the same catastrophe to fall upon them again. So he's asked his counsel. Bhishma said there was a princess in the Yadu house named Kunti, another named Gandhari, who was the daughter of the mountain king Suval, and a third princess named Madhuri, his mother. He suggested that these two girls could be sought for Pandu and the other for Dhritarashtra. Vidur folded his hands and replied, "My lord, you are our father, our protector, and our preceptor. You should do whatever you feel is proper for the welfare of our dynasty." Vishnu paced up and down in his palace chamber. He had heard that Gandhari had received a boon from Shiva, who had said that she would have 100 sons. Surely she would make a good wife for Dhritarashtra, who had also been blessed in a similar way by Vyasdev. So now this is how he's doing the matchmaking. Who should marry whom? तो कह रहे हैं क्योंकि गांधारी को जो है वरदान मिला है महादेव से कि उनके 100 पुत्र होंगे और धृतराष्ट्र को वरदान मिला है व्यासदेव से कि उनके 100 पुत्र होंगे. So it's a good match. Both of them have got the same boon. So if they marry, then that's how he decided. 100 sons from that powerful prince would be a great asset to the kingdom and would ensure perpetuation of the Kuru dynasty. Perpetual the dynasty will go because इतना बड़ा जो कुरु जो है, they are world क्या है, वो पूरे world के सम्राट हैं. They are सम्राट. They are not kings. They are सम्राट. They are rulers of the whole planet. So they think कि अगर हमारे पास 100 राजकुमार होंगे जो शक्तिशाली होंगे, तो it will be very good asset for the kingdom. Bhishma at once arranged for a messenger to go to Suval and ask for the hand of Gandhari. So there are various means through which marriage happens in Kshatriyas. So one is that you can seek a girl's hand, and if they agree, then they send. When King Suval heard Bhishma's request, he was hesitant. Of course, he was hesitant because जिनके लिए मांगा है धृतराष्ट्र के लिए, he's blind. How could his daughter marry a blind prince? But Suval reflected on the possibility. Dhritarashtra belonged to the glorious Kuru house. They had ruled the world for thousands of years. Considering the fame, nobility, and virtue of the Kurus, Suval assented to the marriage. Because they think कि for Kshatriya to कि जो हमारी जो पुत्री है, it will be married in the house of those who have ruled the whole planet for thousands of years. ये हम पढ़ते हैं कैसे भगवद गीता में भी अर्जुन बोलते हैं कि जो अगर हम युद्ध करेंगे तो जो पितर हैं गिर जाएंगे और जो गुरु से जो डिनेस्टी चलती आ रही है वो खत्म हो जाएगी. So that means they've been ruling the earth planet for thousands of years. तो ऐसे घर के अंदर अपनी बेटी देनी, that it's considered it's a good fortune. Even though the prince is blind, but the घर, that kul is so noble. They saying they are famous, they are noble, and they are virtuous kings. So ऐसे घर में पुत्री देना will be good fortune. So he agrees. He had a son
Shakuni, he had his son Shakuni bring Gandhari to Hastinapur. So they asked for the girl's hand, and the brother brings the, the sister to get married at Hastinapur. When the princess heard that she was to marry blind Dhritarashtra, she took a cloth and bound her own eyes, not wanting to be in any way superior to her lord. So इसमें बताते हैं कि कैसे जो गांधारी है, I think there are five what should I say, there are five women who are glorified as being most chaste, और उसमें एक जो है वो गांधारी आती है. I think one is Ahalya, then Draupadi, then Sita, then Tara, and then Mandodari, Ravan's wife. Like this. So she comes in the five most chaste women. And we can understand that she doesn't protest to her father कि आप मेरे से ऐसे किस जन्म की दुश्मनी ले रहे हैं जो मुझे एक अंधे राजकुमार के साथ कर रहे हैं. But she accepts कि जो पिताजी ने किया वो ठीक किया, और वो अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध देती हैं because she doesn't want to be superior to her lord, her husband. Because for a woman, the first guru is husband. Husband is for a married woman, the first guru is husband. So one should always know. See, husband is also called Gurupati. First guru is husband. So she doesn't want to be superior in any way from her husband in that manner, and she puts so that they will be even in their dealings. Okay, Neha Mataji raised the hand. Neha Mataji, I will come to the end. In last 10 minutes, we can ask questions. Okay, ma'am. Shakuni gave away his beautiful sister to Dhritarashtra, along with many gifts sent by Suval. After being duly respected by Bhishma, he then mounted his golden chariot and returned to his kingdom. Gandhari became immediately devoted to her husband. She pleased him in every way by her attentions. She never even referred to other men in her speech, and her eyes were always covered by the cloth. With Dhritarashtra married, Bhishma turned his mind to Pandu's marriage because जो Dhritarashtra है, उनका जन्म एक साल पहले हुआ, so बड़े थे, तो पहले उनकी शादी कराई. So now comes the time of Pandu's marriage. He had heard that the Princess Kunti would soon select a husband at a special ceremony known as Swayamvar. That princess was famous for her beauty and womanly qualifications, and she belonged to the noble Yadu race. Bhishma told Pandu to leave at once for Swayamvar and try to win Kunti's hand. So, like many illustrious maidens from illustrious family, like Gandhari was one. ऐसे हम सुनते हैं बाद में Rukmani, she was another one, Draupadi, Kunti, where everybody wants to marry them. There is no king worth their salt जो उनसे शायद विवाह नहीं करना चाहता, and they all come. So that's why the Swayamvar is done. So the most powerful one, or whatever the princess likes, she can pick her husband, and they display their might. अलग-अलग तरह से Swayamvar रचाए जाते हैं. तो इसी तरह से जो एक बहुत ही उस टाइम के ऊपर somebody was very special was Princess Kunti, और उनका जो स्वयंवर रचाया जा रहा था, तो अब क्योंकि स्वयंवर था तो इसलिए उनको पांडु को भेजना पड़ा कि आप जाइए और आप अपनी उससे स्वयंवर जीत के आए, उनका हाथ लेकर आए. The king mounted a great stallion and rode swiftly to the southern kingdom of Kunti Bhoj, the father of Kunti. Usually जब स्वयंवर में जाते हैं तो सेना लेके जाते हैं क्योंकि लड़ाई लड़नी पड़ती है. It is not so easy because जितने बाकी राजा आते हैं वो लड़ाई के लिए तैयार होके आते हैं, अपने राजा लेकर आते हैं, अपने साथ सेना लेकर आते हैं. But जब पांडु गए, so he just went alone. Like a proud lion, he strode into the Swayamvar arena. When the many other kings assembled there saw Pandu, broad-chested and with eyes like a furious bull, they considered him to be a second Indra. He outshone all the other monarchs, like the sun rising in the morning and obscuring the stars. When Kunti saw the powerful Hastinapur monarch gazing,
at her, her mind became agitated. Trembling with emotion, she walked slowly toward him and shyly placed the nuptial garland around his neck. So जो कुंती महारानी है, उन्होंने जो कुंती है वो सब तो महारानी नहीं है, she's a राजकुमारी. तो जब वो देखा उन्होंने उनको, और हम देखते हैं कैसे कि जब वो आए, so he had a very dramatic presence in that whole arena. और वहाँ पर कुंती जो राजकुमारी कुंती है, उन्होंने भी उनको देख के पसंद करके उन्हीं के गले में जो हार है वो डाल दिया स्वयंवर. Although there were many kings and princes desirous of Kunti's hands, and although a swayamvar would almost always end up in a fight, like we saw in the case of Rukmani, that everybody fought with Krishna, you can't take her like that. So they always fight. You have to prove your mettle, even if the princess is chosen, but they say you have to fight with us to prove your worth, or we are more stronger. Although there were many kings and princes desirous of Kunti's hand, and although swayamvar would almost always end up in a fight, the kings abandoned any thought of competing with the mighty Pandu for the princess. Mounting upon their steeds and chariots, they simply returned the way they had come. जैसे आए थे वैसे चले गए. उनमें किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस जो सम्राट पांडु से कोई युद्ध करना कि सोचे भी. King Kunti Bhoj came down from the royal platform into the arena, his face bright with delight. There could be no better match for his daughter. She's getting married to the emperor of the whole planet. The king immediately arranged for the wedding ceremony, and he presented Pandu with gifts of great wealth. After a few days, the couple left for Hastinapur, accompanied by a large retinue bearing many colorful pennants which waved in the breeze. The soldiers beat drums and blew loudly upon the conch shells as they proceeded towards Pandu's capital. Seated with Kunti upon a shining golden chariot, surrounded by Brahmins offering benedictions, Pandu entered Hastinapur state. And I'm so sorry, I kept on reading, I forgot, I had requested कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अपना hand raise करें. I'm very sorry. इसी में लग गया. Please raise your hands. Those who want to read, I will open it. Okay, Neha Mataji. Okay, please read. Prabhuji, I wanted to ask one question also. Question will ask later, Mataji. You first read because नहीं तो flow टूट जाएगा Mataji. Okay, Prabhu. Okay. After a few days, na? यहाँ से Mataji. Bhishma was overjoyed. Okay. Bhishma was overjoyed to see Pandu married to the gentle and beautiful princess, but he also felt that the king needed another queen. Although Gandhari had received the benediction that she would bear 100 sons, Kunti had no such boon. Bhishma wanted to ensure that the virtuous monarch was blessed with powerful sons. He went personally to the kingdom of Madra to seek the hand of Madri for Pandu. She was under her brother's King Salya's protection. King Salya received with all honor Bhishma. King Salya received with all honor Bhishma and his retinue of ministers, Brahmins and Rasis. He brought Ganga's son into his palace and offered him a seat of white ivory studded with precious gems. Then the king bathed his feet and offered him Aragya. His reception completed, Bhishma said to King Salya, "O king, you should know that I am here to seek a maiden. I have heard that you have an illustrious and chaste sister, and I have chosen her for King Pandu. Please tell me if you approve of this arrangement." King Salya replied that the Kuru house was more than worthy of being allied with his house. There was, however, an ancient custom in his family that no girl could be given in marriage unless the suitor offered a tribute. Bhishma had already heard of this custom because it dated back to the great Brahma himself. He had prepared and thus replied to Shalya, "There is no fault in this custom, as it has the approval of the self-born creator Brahma. Therefore, please accept the gift I have brought in exchange for the princess." Bhishma men then carried in heaps of gold coins, pearls,
pearls, corals, and gems of various colors and set them before Shalya. Bhishma also presented the king with hundreds of elephants, horses, and chariots. Shalya received all the wealth with a delighted heart. He then gave Madri to Bhishma, who then soon returned to Hastinapur and performed the wedding ceremony. Pandu established each of his wives in their own splendid palaces and gave himself up to the enjoyment with them both. He sported in the palace groves and gardens, appearing like a celestial, two beautiful consorts. Thank you, Mataji. So now we come to the next chapter, which is how Pandu is cursed and also blessed. What happens? So what we'll do, we will do this chapter next time when we decide, maybe hopefully tomorrow. अगर आप लोगों को सब इस session ठीक लगा महाभारत का, so we can do it. We'll read it tomorrow. And now, if anybody has any question, you can ask. Prabhuji, the Kuru dynasty, or the what you call the Kuru dynasty was for the whole Pandavas and the Kauravas. No? Yes, ma'am. Only the Dhritarashtra were called Kurus and Pandavas were Kuru dynasty. Yes, माता जी, ये दोनों के लिए ही था. It was धृतराष्ट्र. ये हम देखते हैं भगवद गीता के अंदर भी वो बोलते हैं कि कुरुपुत्रों ने मेरे कुरुपुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया. So he made that distinction. Otherwise, there was no distinction because the family is Kuru family. But he, because उनको राज्य चाहिए था, तो उन्होंने ही thought कि जो मेरे पुत्र हैं वही उत्तराधिकारी हों, क्योंकि किसी को पता नहीं था माता जी कि जो पांडु हैं उनके पुत्र हुए हैं और जंगल में ऐसे को मालूम था कि उनको क्या श्राप मिला है. वो पढ़ेंगे हम आगे कि कैसे श्राप मिला है. So they had no clue that he will ever have sons. So he knew कि मेरे ही पुत्र आगे जो है बढ़ेंगे, और उन्होंने हमेशा उनको उसी तरह से देखा कि ये और उनकी जो आंखों में यही भेद रहा कि जो मेरे पुत्र हैं यही कुरु हैं, और वो क्योंकि पांडु के पुत्र हैं वो पांडव हैं. Like this. So both were called both were from Kuru dynasty, but it was only differentiation which he made, Dhritarashtra. That is why. Yes, yes, okay. Yes, Thank you, Prabhuji. So I hope आपको इस session ठीक लगा. We tried to speak Mahabharata. It's a little lighter story, and it's very interesting and very you can say it has many lessons also. But वो हम धीरे-धीरे अगर हम पूरा पढ़ पाते हैं, मुझे नहीं पता कितना कर पाएंगे, but we will find how it has so many lessons for us as devotees also. So we'll keep this session short. We'll read maybe one lesson every day जब तक हम पढ़ पाते हैं. इसके अंदर जो है बहुत सारे lessons हैं. मैंने देखा नहीं कितने इसके अंदर है lessons. It's part 1. Part 1 only has 48 chapters. So we'll see how much we can do, what Krishna desires. So I hope कि ये ठीक रहा, and thank you for tolerating me. So we will end the session now. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshikarne Jagadguru Shira Prabhupada Ki Jai. Panchakalpatrubhyascha kripa sindhubhe vacha patitanam pavnebhyo vaishnavebhyo namo. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Wonderful session. Thanks, Prabhuji.